नाज़रीन, कुछ ही दिन पहले गूगल के एक्स सीईओ का मुतनाज़ा इंटरव्यू स्टैनफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया गया था। लेकिन पब्लिश होने के कुछ ही दिनों बाद गूगल कंपनी पर इस इंटरव्यू की वजह से इतना प्रेशर आया कि इस इंटरव्यू को यूट्यूब से रिमूव करना पड़ गया। और ये तो हम सब जानते हैं कि अगर ऐसा मुतनाज़ा इंटरव्यू एक बार पब्लिश हो जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग्स फौरी तौर पर बन जाती हैं। लिहाजा हम भी इसको हासिल करने में कामयाब रहे हैं। वैसे तो इस इंटरव्यू का दौरानिया काफ़ी लंबा था, लेकिन इस वीडियो में हम इस इंटरव्यू के सिर्फ 4 ज़रूरी हिस्सों को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस इंटरव्यू में आखिर उसने ऐसा क्या कहा कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी को शदीद तनकीद के बाइस इस इंटरव्यू को यूट्यूब से रिमूव करवाना पड़ गया। नाज़रीन, इंटरव्यू के पहले हिस्से को पहले सुन लेते हैं, फिर बाद में इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इसको सुनने से पहले हमारा 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन 3 टर्म्स को समझे बगैर हम उसकी बातें मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते। और वो 3 चीज़ें हैं कॉन्टेक्स्ट विंडोज़, LLM एजेंट्स और टेक्स्ट एक्शंस। इन 3 चीज़ों को मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझा देता हूँ। नाज़रीन, चैट जीपीटी से जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं या प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो चैट जीपीटी के आपके प्रॉम्प्ट को समझने की एक लिमिट है, यानी वो एक हद तक ही आपके प्रॉम्प्ट को समझ सकता है। इसके समझने की लिमिट को कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। और चैट जीपीटी में आपके दिए गए प्रॉम्प्ट को हमेशा एक AI बेस्ड मॉडल समझता है और उसको प्रोसेस करता है। उन मॉडल्स को LLM मॉडल्स कहा जाता है। LLM मॉडल्स आपके दिए गए प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करके जो आंसर आपको करते हैं, उन आंसर्स को टेक्स्ट एक्शंस कहा जाता है। तो चलिए इंटरव्यू के पहले हिस्से को सुनते हैं। In the next year, you're going to see very large context windows, agents, and text to action. When they are delivered at scale, it's going to have an impact on the world at a scale that no one understands yet. Much bigger than the horrific impact we've had by social media, right, in my view. So here's why. In a context window, you can basically use that as short-term memory. And I was shocked that context windows could get this long. The technical reasons have to do with the fact that it's hard to serve, hard to calculate, and so forth. The interesting thing about short-term memory is when you feed you ask it a question, read 20 books, you give it the text of the books is the query, and you say, tell me what they say. It forgets the middle, which is exactly how human brains work too, right? That's where we are. With respect to agents, there are people who are now building essentially LLM agents. And the way they do it is they read something like chemistry, they discover the principles of chemistry, and then they test it. And then they add that back into their understanding, right? That's extremely powerful. And then the third thing, as I mentioned, is text to action. So I'll give you an example. The government is in the process of trying to ban TikTok. We'll see if that actually happens. If TikTok is banned, here's what I propose each and every one of you do. Say to your LLM the following: make me a copy of TikTok, steal all the users, steal all the music, put my preferences in it, produce this program in the next 30 seconds, release it, and in 1 hour, if it's not viral, do something different along the same lines. That's the command. Boom, 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 right? You understand how powerful that is. If you can go from arbitrary language to arbitrary digital command, which is essentially what Python in this scenario is, imagine that each and every human on the planet has their own programmer that actually does what they want, as opposed to the programmers that work for me who don't do what I ask, right? The programmers here know what I'm talking about. So imagine a non-arrogant programmer that actually does what you want, and you don't have to pay all that money to. And there's infinite supply of these programs. And this is all within the next year or two. Very soon. Those 3 things, and I'm quite convinced it's the union of those 3 things that will happen in the next wave. So you asked about what else is going to happen. Every 6 months I oscillate. So we're on it's an even odd oscillation. So at the moment, the gap between the frontier models, of which there are now only 3, I'll review who they are, and everybody else, appears to me to be getting larger. 6 months ago, I was convinced that the gap was getting smaller. So I invested lots of money in the little companies. Now I'm not so sure. And I'm talking to the big companies, and the big companies are telling me that they need 10 billion, 20 billion, 50 billion, 100 billion. Stargate is 100 billion, right? They're very, very hard. Sam Altman is a close friend. He believes that it's going to take about 300 billion, maybe more. I pointed out to him that I'd done the calculation on the amount of energy required, and I then
in the spirit of full disclosure, went to the White House on Friday and told them that we need to become best friends with Canada. नाज़रीन, एरिक ने इस हिस्से में बताया कि अगले आने वाले साल यानी 2025 में हम बड़े पैमाने पर टेक्स्ट विंडोज, एलएलएम एजेंट्स और टेक्स्ट एक्शंस देखेंगे जो दुनिया पर ऐसा खौफनाक असर डालेंगे जिसका शायद अभी तक किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। एरिक ने बताया कि एलएलएम एजेंट्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ऐसे टेक्स्ट एक्शंस कर सकेंगे जो नाकाबिले यकीन होंगे। इसके लिए एरिक ने टिकटॉक की मिसाल देते हुए समझाया कि जैसे हुकूमत टिकटॉक बंद करने की कोशिश कर रही है और अगर टिकटॉक वाकई ही बंद हो जाता है तो आप एलएलएम एजेंट्स को ऐसा हुक्म देंगे कि मेरे लिए टिकटॉक की एक कॉपी बनाओ, तमाम यूजर्स और म्यूजिक को चोरी करो और इसमें मेरी दी गई प्रेफरेंसेस को शामिल करके 30 सेकंड में इस प्रोग्राम को तैयार करो और अगर ये 1 घंटे में वायरल ना हो तो इसी तरह की कोई दूसरी चीज बार बार बनाते रहो। नाज़रीन, इस कमांड को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ताकतवर चीज है, यानी हर इंसान के पास अपना जाती प्रोग्रामर होगा। एरिक के मुताबिक इस तरह की कोडिंग्स के लिए काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं, ताहम फुल स्केल कम्प्लेक्स कोडिंग वाले एलएलएम मॉडल्स अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां वो सिक्योरिटी वॉल्स को ब्रीच करके टिकटॉक की कॉपी ऐप के लिए म्यूजिक और सीक्रेट डाटा डाउनलोड कर सकें। फिलहाल ऐसा मुमकिन भी नहीं क्योंकि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डाटा यानी बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडोज और बड़े एलएलएम एजेंट्स की ज़रूरत होगी जिसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की ज़रूरत है और एनर्जी क्राइसिस भी पैदा हो सकते हैं। मजीद उसने ये भी बताया कि 6 माह पहले तक ये नामुमकिन लग रहा था, लेकिन जो पेशकदमी पिछले 6 माह में मैंने देखी है तो अब ऐसा मुमकिन लग रहा है कि बहुत ही जल्द हम अपने प्रॉम्प्ट के जवाब में सिंथेटिक और प्रिसाइज जवाब हासिल कर सकेंगे। अब हम आपसे इंटरव्यू का वो हिस्सा शेयर करते हैं जिसकी वजह से गूगल पर शदीद तनकीद की गई और ऐसे मसाइल पैदा हुए कि इस इंटरव्यू को डिलीट करवाना पड़ा। You were at Google for a long time, and they invented the transformer architecture. Peter. It's all Peter's fault. Thanks to brilliant people over there like Peter and Jeff Dean and everyone. But now it doesn't seem like they've kind of lost the initiative to OpenAI, and even the last leaderboard I saw, Anthropic's Claude was at the top of the list. I asked Sundar this. He didn't really give me a very sharp answer. Maybe you have a sharper or a more objective explanation for what's going on there. I'm no longer a Google employee. Yes. In the spirit of full disclosure, Google decided that work-life balance and going home early and working from home was more important than winning. And the reason startups work is because the people work like hell. And I'm sorry to be so blunt. But the fact of the matter is, if you all leave the university and go found a company, you're not going to let people work from home and only come in 1 day a week if you want to compete against the other startups. When in the early days of Google, Microsoft was like that. Exactly. But now it seems to be... And there's a long history of, in my industry, our industry, I guess, of companies winning in a genuinely creative way and really dominating a space and not making this the next transition. It's very well documented. And I think that the truth is founders are special. The founders need to be in charge. The founders are difficult to work with. They push people hard. As much as we can dislike Elon's personal behavior, look at what he gets out of people. Mm-hmm. I had dinner with him and he was flying. I was in Montana. He was flying that night at 10 p.m. to have a meeting at midnight with X.AI. Right? Think about it. I was in Taiwan, different country, different culture. And they said that, and this is TSMC, who I'm very impressed with, and they have a rule that the starting PhDs coming out of they're good physicists, work in the factory on the basement floor. Now, can you imagine getting American physicists to do that? The PhDs? Highly unlikely. Different work ethic. And the problem here, the reason I'm being so harsh about work is that these are systems which have network effects, so time matters a lot. And in most businesses, time doesn't matter that much, right? You have lots of time. You know, Coke and Pepsi will still be around, and the fight between Coke and Pepsi will continue to go along, and it's all glacial, right? When I dealt with telcos, the typical telco deal would take 18 months to sign, right? There's no reason to take 18 months to do anything. Get it done. It's just, we're in a period of maximum growth, maximum gain. Everything I've done technically. And yet it may be that the capital costs, which are so immense, fundamentally changes how software is built. You and I were talking, my own view of software programmers is that software programmers' productivity will at least double.
There are 3 or 4 software companies that are trying to do that. I've invested in all of them in the spirit. And they're all trying to make software programmers more productive. The most interesting one that I just met with is called Augment. And I always think of an individual programmer, and they said, that's not our target. Our target are these 100-person software programming teams on millions of lines of code where nobody knows what's going on. Well, that's a really good AI thing. Will they make money? I hope so. You think that the leaders are pulling away from the rest? Right now. And this is a really, the question is roughly the following. There's a company called Mistral in France. They've done a really good job. And I'm obviously an investor. They have produced their second version. Their third model is likely to be closed because it's so expensive. They need revenue and they can't give their model away. So this open source versus closed source debate in our industry is huge. And my entire career was based on people being willing to share software in open source. Everything about me is open source. Much of Google's underpinnings were open source. Everything I've done technically. इस हिस्से में एरिक से सवाल किया जाता है कि गूगल ने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इजाद किया था और इनके एंथ्रोपिक क्लाउड मॉडल पहले नंबर पर था, लेकिन बाद में ओपन एआई पहले नंबर पर आ गई। तो इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? एरिक ने जवाब दिया कि गूगल नंबर 1 रैंक पर रहने की बजाय वर्क लाइफ बैलेंस और वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तरजीह देता है, जिस वजह से ऐसा हुआ है। यही वो जवाब था जिसके बाद मसाइल पैदा हुए। मजीद उसने ये कहा कि शुरू में गूगल ने ज्यादा मेहनत से काम किया, जैसे कि हर नई कंपनी को करना चाहिए, और वो शुरू में कामयाब भी रही, लेकिन बाद में वो इसी कामयाबी को मेंटेन नहीं कर पाई और अब गूगल में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। एआई और एआईजी एक ऐसी फील्ड है जिसका नेटवर्क इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और इस फील्ड में वक्त बहुत कीमती अहमियत का हामिल होता है और कोई भी अच्छा और मेहनती बिजनेस ऑनर ये नहीं चाहेगा कि उसका एम्प्लॉय घर बैठे काम करे और हफ्ते में 1 दिन ऑफिस आए। लेकिन गूगल में ऐसी बहुत सी रिलैक्सेशंस और अमेरिकन वर्क एथिक्स हैं जो गूगल को नंबर 1 पोजीशन पर रहने से रोकती हैं। नाज़रीन, अब हम इसी से जुड़े इंटरव्यू के अगले हिस्से को सुनते हैं जो कि काफी मुतनाज़ा था। Or competition with China as well. So I was the chairman of an AI commission that sort of looked at this very carefully. And you can read it. It's about 752 pages. And I'll just summarize it by saying, we're ahead, we need to stay ahead, and we need lots of money to do so. Our customers were the Senate and the House. And out of that came the CHIPS Act and a lot of other stuff like that. A rough scenario is that if you assume the frontier models drive forward and a few of the open source models, it's likely that a very small number of companies can play this game. Countries, excuse me. What are those countries, or who are they? Countries with a lot of money and a lot of talent, strong educational systems, and a willingness to win. The US is one of them. China's another one. How many others are there? Are there any others? I don't know, maybe. But certainly in your lifetimes, the battle between the US and China for knowledge supremacy is going to be the big fight, right? So the US government banned essentially the NVIDIA chips, although they weren't allowed to say that was what they were doing, but they actually did that into China. They have about a 10-year chip advantage. We have a roughly 10-year chip advantage in terms of sub-DUV, that is sub-5 nanometer. 10 years, that long? Roughly 10 years. Wow. And so you're going to have, so an example would be, today we're a couple of years ahead of China. My guess is we'll get a few more years ahead of China, and the Chinese are whopping mad about this. It's like hugely upset about it. इसमें एरिक ने यह बताया कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स काफ़ी अरसा से एक डिबेटेबल इशू रहा है और इसने अपने कैरियर में हमेशा ओपन सोर्स प्रोग्राम्स को तरजीह दी है और सभी लोग सॉफ्टवेयर्स को ओपन सोर्स में शेयर करने को तरजीह देते हैं। यहाँ तक कि गूगल का बेसिक स्ट्रक्चर भी ओपन सोर्स मॉडल है, यानी कोई भी चीज़ हिडन या सीक्रेट नहीं रह जाती। एरिक खुद भी गूगल का एम्प्लॉय रह चुका है, लेकिन इसका ये जवाब भी गूगल की कंपनी के पॉलिसी से बिल्कुल उलट है, क्योंकि गूगल ने हमेशा ये क्लेम किया है कि हर यूजर्स का डाटा क्लोज सोर्स है और हर यूजर के डाटे को सीक्रेट रखा गया है, लेकिन एरिक ने इसका बिल्कुल उलट जवाब दिया। Worked for the Secretary of Defense for 7 years and tried to change the way we run our military. I'm not a particularly big fan of the military, but it's very expensive, and I wanted to see if I could be helpful. And I think, in my view, I largely failed. They gave me a medal, so they must give medals to failure or whatever. But my self-criticism was nothing has really changed. And the system in America is not going to lead to real innovation. So watching the Russians use tanks to destroy apartment buildings with little old ladies and kids just drove me crazy. So I decided to work on a company with your friend, Sebastian Thrun, and as a
former faculty member here, and a whole bunch of Stanford people. And the idea basically is to do two things. Use AI in complicated, powerful ways for these essentially robotic war. And the second one is to lower the cost of the robots. Now you sit there and you go, why would a good liberal like me do that? And the answer is that the whole theory of armies is tanks, artillery, and mortar, and we can eliminate all of them. इस हिस्से में एरिक से ये पूछा गया कि एआई और एआईजी के मुकाबले में कौन सा मुल्क सबसे आगे है और यूक्रेन और रूस की जंग में एआई किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, जिसके जवाब में एरिक ने बताया कि वो एआई कमीशन का चेयरमैन है और इस फील्ड में आगे रहने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स, रिसोर्सेज और इस फील्ड का टैलेंट चाहिए, जो इस वक्त सिर्फ 2 ममालिक के पास है, एक अमेरिका और दूसरा चाइना। इसके अलावा फिलहाल इस लिस्ट में तीसरा कोई मुल्क नहीं और हमारे लाइफ स्पैन में इस दौड़ में सिर्फ यही 2 ममालिक नजर आएंगे। मजीद उसने ये कहा कि अमेरिका को एआई फील्ड में चाइना से 10 साल की सबकत हासिल है और वो आगे भी हमेशा इस फील्ड में नंबर 1 रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नवीडिया चिप्स जो कि शुरू में अमेरिका में बैन की गई थी, लेकिन बाद में अमेरिका ने किसी तरह इसको मैनेज कर लिया था और इस काम को जारी रखा था, लेकिन इससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन को लीक नहीं किया और इन चिप्स की सब डीवी और सब 5 टेक्नोलॉजी में चाइना से 10 साल आगे चला गया। इस चीज की चाइना को बहुत ज्यादा तशवीश और गुस्सा है और इस मामले को लेकर चाइनीज बहुत ही ज्यादा अपसेट हैं। इसके अलावा जंग में इम्पैक्ट के हवाले से उसने बताया कि वो 7 साल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के तौर पर काम कर चुका है, जिसमें उसने मिलिट्री के काम करने के तरीके को तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। एरिक ने बताया कि वो 2 चीजों की इम्प्लीमेशन के लिए कोशिश करना चाहता था, जिसमें पहली चीज ये थी कि एआई और कॉम्प्लिकेटेड पावर वेज को रोबोटिक जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और दूसरा इन रोबोट्स की कॉस्ट को कम किया जाए। जिसकी मिसाल देते हुए उसने बताया कि यूक्रेन $500 के ड्रोन से मिलियंस डॉलर्स का टैंक तबाह कर रहे हैं और वो ऐसा बार बार कर रहे हैं, लिहाजा एआई का इम्पैक्ट वार में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नाजरीन, ये थे वो इंटरव्यू के जरूरी हिस्से जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है।